Hello bachcho, let's read this question. In what ways lithium shows similarity to magnesium in its chemical behavior? So in this question we have to answer कि similarity क्या है lithium and magnesium में. So the key concept of this question will be similarity between magnesium and lithium. Magnesium and lithium. As we know, lithium and that belongs to the first group and magnesium belongs to the second group of the periodic table. And if we write the first group elements, these are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. And the second group elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. So these are the first and second group elements, and we can see lithium and magnesium are diagonal to each other and it have similar properties due to which they shows the diagonal behavior. और ये लिथियम और मैग्नीशियम जो है हमारे पास दोनों एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट लिथियम एंड मैग्नीशियम शोज द डायगोनल बिहेवियर. एंड सिमिलरिटी क्या होती है मैग्नीशियम एंड लिथियम में? दैट बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम react slowly with cold water. ठंडे पानी के साथ लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों स्लो रिएक्शन देते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट सिमिलरिटी. एंड द सेकेंड इज जो ऑक्साइड होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, बोथ आर लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर. तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ both lithium and magnesium are much less soluble in water. पानी में कम soluble होते हैं and their hydroxides decompose at high temperature. इनका जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर. एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसे हीट करते हैं then it leads to the formation of Li2O, which is the lithium oxide. Along with this, water molecule is released. So heat करने पर this triangle represents the sign of heat. Heat करने पर हमें lithium का ऑक्साइड मिलता है and water molecule मिलता है, whereas magnesium hydroxide है वो भी जल्दी से decompose हो जाता है हाई टेम्परेचर पर. और अगर हम इसे भी हीट करते हैं then it leads to the formation of magnesium oxide plus water. So this reaction take place. And जो हमारा थर्ड सिमिलरिटी का पॉइंट है that is कि जो both lithium and magnesium है they react with the nitrogen to form the nitrides. So both lithium and magnesium react with N2 to form nitrides. For example, lithium है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा and we have to give heat.
then it leads to the formation of nitride, which is Li3n. And this is the chemical reaction takes place when lithium reacts with the nitrogen, and if magnesium reacts with the nitrogen, then it leads to the formation of Mg3n2. And this is the chemical reaction for this. And the next point is lithium or magnesium don't form peroxide and superoxide. peroxide और superoxide formation के लिए we need a large size cation, but दोनों का ही जो cation का size है that is small. So we can write the fourth point, both, or we can say neither lithium nor magnesium, neither lithium nor magnesium, we can also write the symbol for magnesium, it is Mg, form peroxides or superoxides. So these are some similarity points of magnesium and lithium. And this is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.